Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really well, and in this video I want to talk about grant tests and how to give them efficiently and use the tool available at your disposal really efficiently. So the first thing is, always treat grant tests like another learning tool, just like you treat your question bank and your notes. Do not use it as a competitive tool and do not compare yourself with others when you give a GT. क्योंकि अगर आप अपने आप को कंपेयर करने लगे एक जीटी के बेसिस पे, देन यू विल ऑलवेज फील बैड बिकॉज आपको नहीं पता बाकी बच्चे अपने किस स्टेज के प्रिपरेशन में एंड उन्होंने कैसे जीटी दिया है. सो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. अगर आपने अच्छा भी स्कोर करा जीटी में तब भी कंपेयर आप मत करना, बिकॉज दिस इज जस्ट अ ग्रैंड टेस्ट. इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्कोर what you'll get in actual exam. So always use it as a learning tool and never as a competitive tool. बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने आप से कंपेयर इस वे में कर सकते हो कि अपने लास्ट ग्रैंड टेस्ट ट्राई करना हमेशा बेटर करो नेक्स्ट ग्रैंड टेस्ट में. सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड ऑलवेज यूज इट एज अ लर्निंग टूल. सेकेंड पॉइंट इज द टाइमिंग व्हेन यू शुड गिव अ जीटी. सो मेरे अकॉर्डिंग आपको जीटी हमेशा 9 to 12:30 AM के बीच में ही देना चाहिए. आई मीन 9 AM to 12:30 PM, बिकॉज एक्चुअल एग्जाम ऑल्सो हैपन्स इन दिस टाइम स्लॉट. एंड अगर आप सारे जीटीज इसी टाइम स्लॉट में दोगे, देन यू विल बी इन द हैबिट ऑफ बीइंग मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट फोकस्ड इन दिस टाइम स्लॉट, एंड इट विल हेल्प इन योर एग्जाम ट्रेमेंडसली. क्योंकि आपके ब्रेन को आदत पड़ जाएगी कि इन 3.5 घंटों में ही सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है. सो दिस वॉज द सेकेंड thing that you should keep in mind, that always give your grand tests in the time period when actual exam happens, that is from 9 AM to 12:30 PM. Next is, how frequently should you give a GT. So मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक GT आप दे दो to see where you stand from the baseline, and this will be on baseline GT and assess yourself further based on this GT. ठीक है. अगर उसके बाद ये आपकी पहली रीडिंग है तो गिव 1 or maximum 2 GTs per month, but not more than that, because your first reading is focused on your notes and your question bank. So do them first. After your first reading, जब आपकी second reading start होती है तो try to give 1 GT every week or every 2 week at least. And after your second reading, you should give a GT every week, because it will keep you in a habit of solving the 200 question paper frequently, and it will train you for your NEETPG exam. So this was the frequency of the GTs that you should give. But make sure that 1 week before the exam, you should not give a GT, because if that doesn't go well, it can decrease your morale. So this is about the frequency of GTs. So next thing and the most important thing is review. अगर आप जीटी देते हो एंड आप जीटी रिव्यू नहीं करते, सो इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ योर टाइम, वेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स एंड वेस्ट ऑफ योर एनर्जी. सो मेक श्योर दैट यू आर रिव्यूइंग योर जीटी. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू रिव्यू अ जीटी एफिशिएंटली. सो उसके लिए पहला पॉइंट ये है कि जिस दिन आप जीटी दे रहे हो, मेक श्योर टू रिवाइज योर जीटी एट दैट डे ओनली. आप उसी दिन करो, बिकॉज अगर आप अगले दिन के लिए छोड़ोगे या कुछ दिन बाद के लिए छोड़ोगे तो आपका मन नहीं लगेगा and you will not be able to revise the GT efficiently. So पहली बात यह है कि आप उसी दिन अपना GT रिवाइज करो जिस दिन आप GT दे रहे हो. Next, how to revise it actually. Then before revising, always keep a pen and a paper with you or your 20th notebook, and always jot down all the questions that you got wrong or that you may have guessed, because those are the topics that you need to revise again. When you are reviewing a GT, make sure that you review all 200 questions again. Even the questions that you got correct, review them, as it will help you revise a topic twice, every topic twice, and you will remember those topics for a longer period of time. Now coming to the questions that you got wrong or you guessed the question. In this I would also like to say that जब आप पेपर कर रहे हो एंड अगर आप क्वेश्चन गेस कर रहे हो तो वहीं पर ही उस क्वेश्चन को गेस करके मार्क कर देना या कहीं लिख लेना कि आपने वो क्वेश्चन गेस किया है, बिकॉज यू हैव टू रिवाइज दैट टॉपिक एज वेल. नाउ जब आप रिवाइज कर रहे हो तो हर क्वेश्चन तो आप फिर से सॉल्व करो, बट द क्वेश्चंस दैट यू गॉट रॉन्ग एंड द क्वेश्चंस दैट यू गेस्ड, you should read the explanation then and there only. Every platform gives you an explanation below every question, so read that explanation, write the gist of that explanation and that topic in your 20th notebook and read it there at that time only, so you'll remember it for a longer period of time.
So in this way, you have to review your GT on the day you give your GT, and that will help you learn the new topics and revise all the topics that was in the GT, and it will help you in your exams. So उसके बाद आते हैं कि हम GT देकर करें क्या, हाउ डू वी प्रोग्रेस फर्दर. सो हर प्लेटफॉर्म आपको जीटी के साथ आपके एनालिटिक्स देता है, एंड इट टेल्स यू हाउ यू डिड इन एवरी सब्जेक्ट एंड हाउ मच questions you got wrong and how many questions you got right in every subject, and it gives you a list of your top to bottom subjects. So take your bottom 3 or bottom 4 subjects, and before you give your next GT, try to read those 3 or 4 subjects again and solve their entire question banks before giving your next GT. In this way, you will always keep practicing your bottom 4 subjects, and you will keep revising your bottom 4 subjects, and a time will come जब आपके bottom ही आपके top subjects बन जाएंगे, and you will focus on the next 3 subjects which are at your bottom of the list. और ऐसे कर करके एक दिन आप 160-170 questions correct कर लोगे, and at that point you will be ready to give your NEET PG exam. So these were some of the tips that I used in my preparation, and they helped me tremendously, and I hope they do the same for you. तो अब ये तो हो गई एग्जाम की बातें. Now on a personal note, I would also like to say that please take adequate breaks in your preparation and take time for yourself as well, because NEET PG is a part of your life. It's not your entire life. So make sure that you're giving yourself the break you deserve and enjoying life as well in between your preparation phase. Thank you and have a nice day, and I wish you all the best for your future exams. Feel free to reach out to me on my Instagram or my YouTube channel, and I'll see you all in the next video.